So thank you once again for an opportunity. I am here to discuss mainly on geographical indication. Uh, some of you might have heard about the GI, but that's actually a revolution which we began quite a long, let's say 18 years ago, when the GI Act was very new, and India got immense benefit from the GI. Mainly, we can talk about the Darjeeling tea, the first GI registered in India, the agriculture product. And now we are exporting Darjeeling to 60 countries. That's the beginning. What I wanted to start on the GI, like how GI benefited India. And I'm coming to the main point today. What is GI? What benefit we received? How we work for the GI? Where we stand and what the revolutions we have begin in India and how we are continuing with the mission for the GI. So let's start about the this is a very recent news about the about our GI already introduced by the Preeti ma'am, that about that we recently worked for the 75 GI, so it has been covered. I will not spend much time on that. Now, directly jump to the main concern, like how agri-GIs, mainly, let me tell you about the first of the GI. GI is an intellectual property right. The first thing which you need to understand is what is intellectual property right. The first point is the property which is created by intellect is an intellectual property right. We all know the concept called as a property. When I say this office belongs to me, I'm the owner of this property. The office belongs to me. So that is a property. It's a tangible property. But when I say I have written a book on intellectual property right, on GI, so that is my copyright. That is my intellectual property right. So the property which is created by intellect, maybe in the form of copyright, maybe in the form of patent, maybe in the form of geographical indication, that is an intellectual property. The most important advantage of the intellectual property is you can take this property from one place to another place, from one country to another country. What I started with the Darjeeling tea, we took Darjeeling from India to Europe or other places. Likewise, we also got champagne from France or Scotch whiskey from Scotland, because those product, Scotch whiskey or champagne, got the GI. So you can take your intellectual property from one place to another place. That is the biggest advantage you will find for the intellectual property right. However, I cannot take this classroom to other place, this office to other place. So that's the biggest difference you can find from the normal property and the intellectual property. So geographical indication is an intellectual property right. This is our forefathers' patent, you can say. Now, and of course, there are three categories in India can get the GI registration. Number one is an agriculture GI. So it particularly, again, there are 5 parameters we need to understand with respect to the agri GI. Number one, soil. Number 2, water. Number 3, environment. Number 4, climatical condition. And number 5 is a community. That's, of course, agrarian community. So if you have a unique soil, specific soil, and say for an example, I can give you an example. I have registered Mahabaleshwar strawberry in 2009. So what is soil? The soil is a red laterite soil. The second element was the water. There is a heavy rainfall you will find in Mahabaleshwar. The third is an environment. You will find particularly Mahabaleshwar is known as a hill station. Then, of course, community, that is agrarian community which took the right benefit of the environment, soil, water, and etc. So that's how a unique product is created by our forefathers, and that's where we can say a GI is our forefathers' patent. So they invented, they found that's the particular land, the place is most suitable for the particular unique product, and they have cultivated. So what the uniqueness of the geographical indication for the Mahabaleshwar strawberry, you will find 200 seeds outside the fruits is only available in Mahabaleshwar. That's 20% extra nutritional value. For other strawberry, you will only find 160
seeds outside the fruits. However, in Mahabaleshwar, you will find 200 seeds outside the fruits. So that's the advantage you can understand. And that there you can easily identify that GI is for unique product. So let me go back to the three categories which can be registered as a GI. Number one is agriculture product. So agriculture product, which is geographically identified unique product. Second is manufactured products. Here also agri-goods are involved. For an example, Goa Feni. It's a cashew Feni. So it is a agri-food or drink. And that's the another part where you can say most of us are not aware of the fact only direct agriculture or horticulture product can get the GI, but there is an opportunity for other agri-foods or agri-produce or agri-drinks can get the GI, and that's where I can say second part is a manufactured products. So process product. And the third one is natural goods. So natural goods, say for an example, Makarana marble from the Rajasthan, which gives more than 97% of calcium carbonate naturally. It's a natural goods registered as a GI. So three categories we have to remember, and out of that, two categories are directly connected to the agriculture sector. One is direct agriculture GI, where you can directly protect, as I said, Darjeeling tea or Mahabaleshwar strawberry or Nashik grapes, etc. Second is indirect agri produce can also get the GI. That is where I can say Goa Feni, and I'm going to talk about the Sur, Chang, or there are also products which we have worked from the Assam are indirect GIs which can be get. Now, what's benefit? Now I'm coming to the most important aspect of the GI is agri-foods. This is a 2020 data from the European Union where you can see the sale value of the agri-product and particularly agri-foods and the drinks is 75 billion euros. Out of that, 15 billion euros are alone from the exports. So whatever the champagne, whatever the Scotch whiskey they are producing, they are exporting to the major part of the world. So even 3 months ago, you can see the major importer for the Scotch whiskey is India right now. So where we stand, basically, what does it mean? Only that, the Scotch whiskey produced there in Scotland, which received the GI, which is actually agri-produce, you can say, but manufactured goods, however, received the GI from the European Union. They took the benefit of the GI and they exported that to the India. No one can manufacture the Scotch whiskey here and cannot give the name Scotch whiskey to that product. So that is where you can say intellectual property received to the Scotland Association. So here, that's the benefit. You can understand the foreign exchange. Huge amount of foreign exchange is available to the Scotland through their GI. Similar thing for the champagne, and of course many other products which may discuss in due course of time. If time permits, today itself we can discuss. That is a feta cheese or sweet chocolates and etc. etc. That's where the European Union took the right benefit of the GI. Now coming to the data, where we stand, where India stands. How many GIs are enforced worldwide? If you see, this is again 2021 data, where you can see China received more than 9,000 GIs. In Europe, they have 59,000 GIs. Where we are, India only granted 450 GIs. So where we stand, even not for 5% with compared to the China, there we are. And that's the concern we have to understand and really need to take the benefit. So what the message to all of us? See, where European Union took the benefit of the agri-foods, agri-GIs, agri-drinks, that we can understand and can initiate a mission in India, like where China is heading, where we stand, that has to be understood properly. Now coming to the
real benefits of the GI. First, I have already mentioned that GI is an intellectual property right. What benefit you will receive? Of course, I said you can export your product, you can get the foreign exchange, that's a direct benefit. What is another benefit? Like a premium price to the farmer. I'm going to share some of the success stories at my end, particularly when we registered the Ajra Gansar from the Kolhapur district. The price was 36. Now they are getting this 72 rupees per kg. I have a number of good example, including Mangalveda Jawar. Now they are also getting the double price. So likewise, a premium price would be available once the GI is there. That indicates particularly GI is a quality tag and people are ready and willing to purchase the quality product by giving a premium to that product. That is what the result we have also successfully received. And then you can see it leads to the premium price. Particularly, you will find the GI is from the rural area. So it's actually raises the income to the rural areas. What I said, Ajra Gansar. Ajra is a taluka there in Kolhapur district. What I said, Mangalveda Jawar. Mangalveda is a taluka there in Solapur district. So this is basically rural products which are unique, receive the GI, now fetching the premium price and ultimately getting the benefit to the rural economy. And that's the first and the important aspect need to be understood. Now let me talk about my personal success stories on geographical indication. I said GI can be granted to agri, non-agri products. So I registered a non-agri product in 2007 called Puneri Pagdi. Puneri Pagdi, that's, you can see, used by the Lokmanya Tilak ji, and a unique product. What is another specialty of the GI need to be understand? Those are the product area specific, geographical area specific products are only entitled to get the GI. And second, those products need to be unique. There has to be specific characteristics attributed to that particular place. So that has to be remembered when you think about the GI. So I registered Puneri Pagdi, and you will find the Puneri Pagdi is now replace the convocation hood in the convocation ceremony in Pune University. So SPPU accepted a proposal to remove the convocation hood or replace the convocation hood with the Puneri Pagdi. So one can imagine how much employment will be generated in Pune area for making of a Puneri Pagdi. So that's where the economic benefit you can understand. That's where you can also understand the employment will be generated. So that's the direct benefit of the GI. Now coming to the agri GI, since today's session is focused on just agriculture or agriculture related this thing. So let me share you some of my GIs on agri front. I have had an opportunity to work for the 77 GI and maximum 60% GIs work from 77s are agriculture GIs. I mentioned about the Mahabaleshwar strawberry. Likewise, I also work for the Nashik grape, Solapur pomegranate, Sindhudurg, Ratnagiri, Kokum, etc. etc. It's further. I recently worked from Latur district called Panchincholi tamarind. You can find 1 feet long tamarind. And unfortunately, we are importing tamarind from the other nations and paying huge amount for that. However, unfortunately, we are not aware of our unique product. So name of the Panchincholi is derived from the Marathi word called chins. Chins means tamarind. So that's how a unique product from the Latur district, from the Panchincholi village, we work for that and we have submitted application. Application is accepted, and the benefit will come to the rural people over there. So that's how the success can be obtained from the GI. Second, about the jamun, we all know that jamun has naturally medicinal properties, but more specific, we work for the Badlapur jamun. We also work for the Bardoli jamun. Both jamuns are considered for the GI, and then there will be a good revolutions in the Badlapur and Bardoli. What the another aspect of the
GI can be understood over here. When we work for the Badlapur Jamun, we found more than 60% trees, Jamun trees has been cut. And for a deforestation, what we can say, had happened near the Thane districts. But when we started working 3 years ago for the Badlapur Jamun, then a particularly trust has been formed, and mainly young people came forward and they began a movement of planting this unique product trees. And today, almost 10-acre land allotted to exclusive for the jamun plantation. So the problem of deforestation has been now set aside by GI, because that's the GI is very important and creating a lot of benefit to the particular region. So that's where the revolution happened. And then we also work for the Akola Kagzi lemons, and of course there are many products. I'm going to share some of them. Now I'm coming to the agri foods. I mentioned either direct agriculture product, what I've covered here, those are the direct agriculture product, but indirect agriculture product also can be registered as a GI. I mentioned initially about the guavani, that's from the cashew, but you can also say the prasadam also can get the GI, and those prasad are unique to particular place. In Maharashtra, there are 3.5 Shakti Pita. One of them is a Renuka Mata Shakti Pita. So in that Renuka Mata Shakti Pita, you will find the prasad is known as a tambul. Some of you might have heard about the tambul. This is in Sanskrit called Trayodashi Vida. So it's like a leaf. Pan khate hain hum log, pan. But this is a unique plant. There you will find all different type of agriculture products are compiled, used, maybe what we can say, sop, elaichi, lung, etc., etc. इकट्ठा बना के particular method से, natural method से उसको बनाया जाता है. It's very tasty, and apart from that, it's also highly medicinal. I mentioned Trayodashi Guni Vida. So what had happened, basically, of course, this is a ancient, वो माता रेणुका को प्रसाद के रूप में दिया जाता है. And when we analyze those products, when we collected the information about the scientific, particularly benefit of this Vida, we collected many research papers and we found excellent medicinal values are there. It's help in the digestion of your system. Digesting system के लिए अच्छा है. इसके अलावा टेस्ट में है. इसके अलावा 3 हफ्ते तक आप इसको रख सकते हैं. So keeping quality, and that to be without preservative use. So one can imagine हमारे forefathers कितने intelligence थे, उन्होंने जो भी बनाया, including प्रसाद. डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो यूनिक है ये हमारे यहाँ पे, बट इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी उन्होंने यूनिक बनाया ताकि आपका कुछ आपके पास प्रॉब्लम ना हो. This has also covered in the Ayurveda. So tambul is also very well covered in the Ayurveda's sculptures, and the water at the Mahugad is unique. There is a Matru Tirtha. What I said about the various elements of the agriculture GI, including the water. So water in the Mahurgad of the Renuka Mata of the Nanded district, where we work for this tambul, had particular unique properties. So that's the uniqueness which comes through the natural resources. I mentioned about the Nashik grapes, which I have registered in 2000, again 9 and 10. So when we work for the Nashik grapes, we found there is a TSS. You all are from majorly from the background of the, say, agriculture. So TSS, total soluble sugar, more sugar content we found. And when we went into deep, we found the Godavari, which starts from the Brahmagiri, carries lots of mineral, flows inside the mountains and the the underground. Then it carries lots of mineral, and that gives the uniqueness taste, particularly a sweet taste to the grapes. Therefore, in Maharashtra, you will find even Solapur, Sangli, and Pune, they are producing grapes, but the grape from the Nasiks are unique, and we have compared those grapes with other districts, and we received the geographical indications registration. Now coming to the another indirect GIs,
apart from Renuka Mata Tambul, the well-known GI you can easily identify from the Tirupati called Tirupati Laddu. That's again the agri-produce. Agri-produce where you can find again Vilaichi and other materials, unique particular place, procure from the particular place, etc. So what does it mean? That's to keep intact the quality, taste, identity of the product. They are procuring only on certain agri products and preparing those products in a particular traditional way, and that gives the uniqueness to that particular product. So here one can easily understand that how agri products, indirect agricultural products are getting benefit. Likewise, I also work from the Dharamshi, that's previously known as the Usmanabad district. There's a Jain Mandir, and there you can see the sweet called Kuntalgiri Kava. This is also Kuntalgiri Peda. So I work, and there will be a great demand for this sweet, which you can keep for a longer period, but tasty and preservative. Now, another indirect GIs where I can also had an opportunity to work. I got an opportunity to work. Basically, it's some of the bamboos from the Himalayan side, which also produces the musical instrument. Particularly when I work for the Bodoland, the tribal community from the Bodoland, they are using particularly particular bamboo to prepare unique musical instrument, and that's where we work. And those are now final stage of registration of the GI. Now let me add some more into our agri-produce GI. So here are some of the names which we have worked for the GI. Basically, either they are from rice, what we can call in very precise term called as a rice beer. It may be a rice beer, or they may be an alcoholic beverage, or they may be a beverage from the flowers. So some of you might have heard about the maua. Maua, that's come from the flower where the tribal community, I work for the Nandurbar tribal community, where we have submitted our application, the application has been already accepted as a maua. Maua, we all know. But what about the medicinal properties of the maua? We know that maua is a drink, maua is tribal drink, maua is mainly, आदिवासी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, etc. etc. लेकिन when we work for the maua, we got a number of additional information about the medicinal values of these products. तो हम लोग जब गए थे गांव में, तो उनकी तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिला कि जो दाई माँ होती है, जो डिलीवरी के लिए गांव में पाड़ा जाम की जगह होती है, वहां पे आदिवासी महिलाओं के पास डिलीवरी के लिए जब जाती है, तो अपने हाथ को महुआ लगाती है. दैट इज वेयर यू कैन से हम लोग अभी पैंडेमिक में जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते थे, तो दे हैव अ नेचुरल सैनिटाइजर कॉल्ड महुआ. Likewise, I work for the Jao Gishi, Jao Bidwi, and Maibra Jao Bidwi. Those rice beers are not covered here considering the space, but I work for these various rice beers. आप सबको पता है जापान में राइस बियर की कितनी डिमांड है, तो वो राइस बियर हमारे यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी सदियों से बनाती है, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है. तो राइस को ही सर्टन मेथड से फर्मेंट करके या फिर प्रोसेस से उसको यूनिक बना के, दो तरीके से आप उसको डिस्टिल और अनडिस्टिल तरीके से भी उसको आप दुनिया में लेके जा सकते हैं. ये ट्रेडिशनल मेथड होता है. कहीं पे मशीनरीज का इस्तेमाल बहुत ही मतलब बिल्कुल नहीं है. वैसे ये प्रोडक्ट हम लोगों ने जीआई किए हैं. यू कैन सी अबाउट द चंग, देन ऑल्सो जॉगरान एंड सूर. सूर जो हम लोगों ने काम किया वो हिमालय में, पर्टिकुलरली उत्तराखंड में जॉनसरी कम्युनिटी जो है वो टॉप ऑफ द हिमालय काम करती है. उसके लिए हम लोगों ने ये जहां से 26 जड़ी बूटियां, अगेन दैट इज अगेन नेचुरल प्लांट्स फ्रॉम द हिमालय, that has been collected by certain community to वो अपनी आप को वहां पे एक्टिव रखने के लिए एडवर्स सिचुएशन में जहां पे बर्फ ही बर्फ है उसमें वो ऐसी वाली प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको हम लोगों ने जीआई कर दिया. उसको सूर कहते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द इंटरनेशनल सिनेरियो वेयर वी स्टैंड, वी बिगिन विद द ग्लोबल सिनेरियो विद चाइना, विद यूरोप, वी डिस्कस अबाउट इंडिया. नाउ दिस इज अ 2021 अगेन टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे है. तो
यूरोप में वाइन एंड स्पिरिट का कल्चर है। वहां पे मैंने एज आई मेंशन अबाउट दी शैम्पेन और स्कॉच विस्की, वो वाइन एंड स्पिरिट है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन 51%, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की 43%, हैंडीक्राफ्ट की सबसे कम है। तो हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की सबसे ज्यादा है और एग्रीकल्चर की काफी कम है। ऑलमोस्ट 25% ऑफ द एग्रीकल्चर जीआई के लिए काम करने का मुझे भारत में सौभाग्य मिला। महाराष्ट्र में मैंने 50 जीआई का काम किया, उसमें ऑलमोस्ट 75% एग्रीकल्चर जीआई थे। तो अगेन थर्ड कैटेगरी ऑफ द इनडायरेक्ट एग्री जीआईस। आप फिर आपको सेरिकल्चर पता है, उसके हिसाब से ये सिल्क, वो सिल्क वाली बातें, वो एक्चुअली हैंडलूम सिल्क हो या फिर आपकी उस हिसाब से आप खेती बनाते हैं, और सेरिकल्चर जिसे कहेंगे। एग्रीकल्चर का ही एक एक्सटेंशन वर्जन होता है सेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर सबको पता है, बट सेरिकल्चर जहां पे आप सिल्क वोम बनाएंगे, सिल्क वोम से सिल्क बनाएंगे, सिल्क से आप साड़ीज और बाकी वाले बताएंगे। तो वी हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू work for many such kind of unique product from different part of India. Initially, we began our journey from Maharashtra with Paithani sari. Then, of course, we went to the other states, including Assam. Again, that's from Bodoland. Arnai is the product. आप जैसे पुणे में आओगे, आपको पुणे की पगड़ी गिफ्ट दी जाएगी, आपको आपका हॉनर किया जाएगा। वैसे आप आसाम में जाओगे तो आपका वेलकम अरनाई से किया जाएगा, दैट्स ए स्कार्फ आपको गले में डालना। वैसे ही वहां पे डोकोनाई जो महिलाएं कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करती, अपने आप हर घर में एक आप पाओगे हैंडलूम है, वो अपना आप खुद बनाते हैं सेपरेटली विदाउट टेकिंग एनी हेल्प, ओनली है नेचर इज देयर सोर्स फॉर ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। सो वो ये ईरी सिल्क भी है, इसको इंडी कहते हैं, और इसका कैस्टर जो पर्टिकुलर वही क्या प्लांट से ही वो सिल्क वॉर्म अपना आप एक लाल कलर का सिल्क बना देता है, जो बाद में खादी जैसे लगता है, वो वाला ईरी सिल्क, इसको इंडी सिल्क भी कहते हैं। इसकी खासियत है, इसका जो सिल्क वॉर्म है वो मरता नहीं, वापिस नेचर में जाता है। एंड देयर यू कैन फाइंड दिस सिल्क इज ऑल्सो नोन एज अहिंसा सिल्क। दिस सिल्क इज ऑल्सो नोन एज silk of millennium. So there is a great demand, और इसकी जो लाइफ है 170 year लाइफ है। So one can imagine, I mentioned about the uniqueness, I mentioned about the process of this unique product, I mentioned about the place where it comes. That is why these are the GI, and this is our forefathers patent. So then indirectly, directly, not direct agriculture, but indirect agriculture also available on that. Now, another fourth category, I mentioned about the bamboo and musical instrument. I mentioned about the sericulture. I mentioned about the manufactured agriculture product. Now, another category which further can be divided into our food products. हम लोग कहते हैं इसको खाद्य संस्कृति। जैसे आप महाराष्ट्र में आओगे तो पुरनपोली है, लेकिन पुरनपोली में भी आप जलगांव की तरफ जाओगे तो उसको मांड्या कहेंगे। तो हर जगह की हर खासियत है, उस हिसाब से वो बनाई जाती है। तो वैसे ये अलग अलग प्रोडक्ट के लिए मुझे सौभाग्य मिला जीआई करने। ओंडला, दिस इज अनदर ट्रेडिशनल डिश फ्रॉम दी आसाम। देन आई डोंट नो, सम ऑफ यू मे बी फ्रॉम द मराठवाड़ा, बट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड लातूर। इन लातूर देयर इज अ पर्टिकुलर विलेज कॉल्ड बोरसरी। वहां की एक दाल है, बहुत ही बढ़िया दाल जिसे कहते हैं, वो अपने आप में एक खासियत है। और उसकी खासियत में से एक खासियत है कि आप इसको कितना भी डायरेक्ट खाओ, आपको एसिडिटी नहीं होगी। वहां की पानी ही वैसे है, जिसे कहते हैं हम लोग अल्कलाइन वाटर वाला कंसेप्ट आजकल आ रहा है ना, वैसे वहां से नेचुरली आता है। गाका गाकी नाम की एक आसाम की और भी प्रोडक्ट, जो 17 से लेके 101 आजू बाजू की जो नेचुरली अवेलेबल प्लांट्स जो है आसाम में, पर्टिकुलरली बोडोलैंड में, वो इकट्ठा करके इसको गाका गाकी, ये नेम है, इसको बनाया जाता है। देन अनदर एग्रीकल्चर में हम लोग फिश को कंसिडर करते हैं, फिशिंग को कंसिडर करते हैं। वैसे ही आसाम में बोडोलैंड में घर घर में आपको फिश टैंक ऑलमोस्ट दिखाई देंगे। तो वहां पे ये फिश जो जेली टाइप फिश होता है उसको बनाते हैं, और उसको 3 साल तक प्रिजर्व रख सकते हैं आप सर्टन
आप जिसे कहोगे हम लोग चटनी बनाते हैं या फिर जाम बनाते हैं, वैसे ही है फिश का जाम, उसको वो ना फार्म कहते हैं, ना यानी फिश और फार्म ये जेल जैसे बनाया हुआ हो। तो ये उनकी तकनीक है, ताकि वहां पे हेवी रेनफॉल, एडवर्स सिचुएशन, ऐसे में आपको फूड प्रिजर्व करके रखना पड़ता है और वो विदाउट प्रिजर्वेटिव नेचुरली आपको उपलब्धि हो जाए। तो ऐसे में हमारे फोर फादर में देखो नेचुरल प्रिजर्वेटिव कैसे बनाए हुए थे, उसमें से ये नाफान। वैसे आई हैव ऑलरेडी मेंशन अबाउट द नेनुका माता प्रीवियसली। रान्या रोटी, रान्या इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम द रांजन, रांजन इज द मटका, मटके पे सेकी गई ये रोटी है, इसको रान्या रोटी कहते हैं। आप लोगों को रुमाली रोटी पता होगी। तो ये थिन होती है, कीपिंग क्वालिटी इसकी बढ़िया होती है। एंड और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो महार कम्युनिटी है और उन्होंने जो प्रमोट किया था, उन्हीं की वहां से ही अपनी ये कम्युनिटी, महार कम्युनिटी जो अपनी है, वहां की महिलाएं ये बनाती है, इसको रान्या रोटी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द माय कंसर्न अबाउट how you can work for the GI. I covered what is GI. GI is a unique product. What is GI? GI is intellectual property right. What is GI? GI is our forefathers' patent. What kind of GI is GI? Can be three types: agri, manufactured, and natural. I covered agri and natural manufacturers are a direct agri and indirect agri. But now coming to the profession, you need not to be a soldier to protect your country's border. You can be a soldier by using your profession to protect your country's border. So that is why I had an opportunity to work. You can see I began from Pune, from my native place. Then we took our GI mission to the Jammu Kashmir. We protected Doda mushroom. Now Doda mushroom is getting double price. We also protected snow mountain garling from the Kashmir, then Chang from the Ladakh, then Sur from the Uttarakhand, and of course you can find 21 GIs from the Bodoland itself. So there one can immediately understand that you can contribute with your profession once you have a knowledge. Now let me share you success stories at our end on the GI. I mentioned in the beginning itself, I worked for the Pune Pagdi as a GI in 2007, and today the convocation ceremony has been conducted with the Pune Pagdi only. So one can say now we are going back to the culture, we are going back to our tradition, we are now protecting our symbol of culture, symbol of heritage, etc. So that's what the happened. See how you can do that. That's now let me share the procedural aspect. See, we have worked for the Ambemore rice, but some of you may have heard that Ambemore is in the extinction of the, ये extinction हो रहा था, ये नामशेष हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड किया, फिर हम लोगों ने ये ऐसे ग्रुप मीटिंग शुरू की है फार्मर्स के साथ, 10-15 उनको हम लोगों ने जो पुरानी सीज थी वो वापिस दे दी। एंड टुडे यू मे नॉट बिलीव दैट 25 फार्मर लोगों ने अपनी अपनी जगह में सक्सेसफुली वापिस अम्बेमोर को लगाया है। दिस इज द मीटिंग वेयर वी हैव कंडक्टेड एंड आई इंटरेक्टेड विद द फार्मर एंड नाउ दे आर विद द अम्बेमोर. So there is another success story at our aim from Shangli. We have worked for the resin called Sangli resin. We, after the GI registration, the Sangli resin received 4 times price. 4 गुना उसको प्राइस दिल्ली में मिला. Jalgaon banana we registered. You can also find in this nice part of this GI, Jalgaon banana की registration के बाद, GI के बाद, तांदुलवाड़ी नाम का जो विलेज है वहां से 12 करोड़ की केली एक्सपोर्ट हुई है जीआई के माध्यम से. You can also read, watch, listen my success stories on my YouTube where we have covered in detail about that individual. हम लोगों का जलगांव में कब हुआ, क्या खासियत है, कब हुआ, कैसे, किसने पब्लिश किया, सब काली बातों को हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बना चुके हैं. और उसकी मेरी यूट्यूब चैनल में, मेरे आर्टिकल में, गूगल में आप गणेश हिंग मेरे डालोगे तो ट्विटर, लिंक्डइन, सब जगह पे डिटेल. कंसिडरिंग द टाइम हमारे पास अभी 1 घंटे का है, फिर भी मैं आपको एक
स्लाइड में काफी बातें बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन इन डिटेल चाहिए तो आपको आगे जाके मेरी आर्टिकल भी मिल सकती है, मेरी यूट्यूब की चैनल भी है, उसमें भी डिटेल वाला इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकता है। ट्विटर में भी समराइज फॉर्म में उसकी लिंक मिल सकती है, लिंक्डइन में भी मिल सकती है। तो दैट इज अ डिटेल वाला सोर्स वाला, बट फॉर टाइम बिंग आई एम कवरिंग ऑल दीज थिंग्स हियर आल्सो। सो देयर इज अनदर जीआई सक्सेस स्टोरीज एट आवर एंड कॉल्ड डहाणू चीकू। आप सबको पता है कि चीकू फ्रॉम द डहाणू, द फर्स्ट चीकू वाज कल्टीवेटेड इन इंडिया इन 1888। उस वो जगह थी घोलवड, डहाणू, जो पालघर में है। वहां से शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में जो है, और बाकी जगह पे फैल गई भी चीकू पूरी भारत में भी मिल रहा है। लेकिन इस चीकू की खासियत ये है कि उस जगह की जो मिट्टी है उसमें कैल्शियम का प्रमाण ज्यादा है। सो उसके हिसाब से वहां की चीकू यूनिक बन गई, और वो ऐसी जगह है जहां पे 12 महीने चीकू आता है। सो उसको कंसिडर करके हम लोगों ने इसका जीआई जब ले लिया, उसके बाद आज वहां पे चीकू चिप्स, चीकू वाइन, चीकू पाउडर, चीकू पार्लर बन चुके हैं। तो जो बाय प्रोडक्ट की इंडस्ट्री बननी चाहिए वो अच्छी तरह से जीआई के बाद बन रही है, और ये प्रोडक्ट भी काफी जगह पे यू कैन सी एक्सपोर्ट होते जा रहा है। और जहां पे आपका ऑब्जर्वेशन होगा, आपके पास डेटा भी होगा कि भारत में एग्रीकल्चर लैंड का मतलब कल्टीवेशन कम होते जा रहा है, वहां पे ऐसी जगह हो रही है कि जहां पे चीकू का, ये जो चीकू जैसी जीआई के बाद जहां पे लैंड बढ़ाई जा रही है, जो बाहर गई थी वो लैंड आगे वापिस आना शुरू हुई है। तो देन देयर इज अनदर सक्सेस स्टोरी एट आवर एंड अबाउट मराठवाड़ा केशर मैंगो। आपको मराठवाड़ा के बारे में मैंने थोड़ी बताया कि ड्रॉन कवर एरिया है, काफी हद तक वहां पे मतलब जिसे कहते हो कि पानी कम आता है। ऐसे में हम लोगों ने वहां पे ये जीआई ले लिया। अभी ये जीआई के माध्यम से वहां के फार्मर्स अलग अलग जगह पे अपना ये केशर मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो क्या बेनिफिट है जीआई का? प्रीमियम प्राइस। क्या बेनिफिट है जीआई का? एक्सपोर्ट। क्या बेनिफिट है जीआई का? आपके बाय प्रोडक्ट्स। क्या बेनिफिट है आपके जीआई का? कि आप इकट्ठा आना शुरू होते हैं और अपनी आप रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करते हैं। देयर इज अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम माय एंड ऑन द जीआई फ्रंट दैट is particularly turmeric. I work for two turmeric, one from Vaigaon, another from Sangli. So ये वायगांव की टर्मरिक जो है उसमें कुरकुमिन का कंटेंट था 6.24, तो औषधि गुणधर्म था ये। उसको जीआई मिलाने के बाद इसका जो प्रीमियम प्राइस है वो 5 गुना बढ़ गया है, और लोगों को दूध, हल्दी का दूध पीने की आदत लग गई है। पूना जैसे शहरों में इसका प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, और इसका बेनिफिट अनबिलीवेबल इसमें से जाते जा रहा है। I have mentioned about the strawberry. I worked for this GI in 2009, and in 2011 we came with the policy called Mahabaleshwar Strawberry Mahotsav. Every year on Good Friday this Mahotsav starts for 3 days. Very simple model they have introduced. They say you come to Mahabaleshwar, you come to our farm, you eat strawberry freely as much as you wish to. मतलब आप उनके फार्म में जाओ, जितनी खाना है खा लो, फ्री स्ट्रॉबेरी खा लो। अगर मैं और आप यहाँ से अपनी जगह से महाबलेश्वर जा रहे हैं तो कितना खाएंगे एक टाइम पे फार्म में जाके? 250 ग्राम, उससे आगे नहीं खाएंगे। तो लेकिन हम लोग वहां पे जा रहे हैं तो 2 दिन रुकेंगे। रुकने के बाद जब हम लोग वापिस आएंगे तो आते आते हम लोग 5, 10, 25 केजी स्ट्रॉबेरी लेके जाएंगे। सो इससे वहां पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, इससे उनको रेडीमेड उनकी यहाँ पे मार्केट मिला हुआ है। इसके अलावा मैप्रो एंड माला जैसी प्रोसेस इंडस्ट्री वहां पे ओपन हुई है, जिससे स्ट्रॉबेरी की प्रोसेस प्रोडक्ट भी लोग लेके जा रहे हैं परमानेंट के लिए। सो एग्रो टूरिज्म इज द अनदर आउटकम ऑफ द जीआई what we have had a success at our end, and that has been also covered in the Indian perspective. There's another product. We all know that apart from basmati, there are n number of non-basmati aromatic rice. I have had an opportunity to work for the
4 non-basmati aromatic rice. One of them is Ajra Gansar. हमारे पूर्वज इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को नाम भी यूनिक दिया था, गण साल. दिस इज इन मराठी वर्ड. गण मीन सुहास और साल मीन दांडी. जो सुहास देने वाला राइस है उसको गण साल कहेंगे. और अजरा नाम की तालुका जो कोल्हापुर में है उसको उसी में आता है. सो नाउ दे वी हैव रजिस्टर्ड दिस एंड दे आर गेटिंग गुड नेशनल इंटरनेशनल मार्केट. इसका परिणाम ऐसे हुआ कि उनका प्रोडक्शन जो कम हुआ था वो भी बढ़ रहा है. What you have to do, what I did, let me share with you. We identified the product. We took those products to the market by exhibition. We gifted those products to a national international forum. We have conducted many seminar exhibition, and of course, already introduced by Preeti ma'am that I received 2 national awards from Government of India in 2015-2016. But for you people, these all articles about me, about our work, about different GIs, about potential GIs, etc. has been covered. As I said, you can click on Google by name Ganesh Hingamire. You may get an access to the many articles like this. My YouTube channel will also be helpful. My book मराठी में GI मानांकन वो भी बुक गंगा में और ऑडियो फॉर्म में भी है. आप जिसको जीआई में काम करना है इन डिटेल में, यहाँ पे तो मैं केवल समराइज फॉर्म में बता सकता हूँ, लेकिन डिटेल में जिसको वर्क करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए ये आर्टिकल, ये बुक, ये यूट्यूब चैनल में भी हेल्पफुल रह सकते हैं. ये एक प्रोजेक्ट जो यूरोप यूनियन के साथ मैंने किया हुआ है वो भी यूट्यूब में है, अ टेल ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंडिया, जहां पे 26 मिनट का 2 वीडियो और 5 मिनट के एक वीडियोस भी जो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे. जहां पे फॉर एन एग्जाम्पल हम लोगों ने नासिक कवर किया है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग कवर किया है. सो वहाँ की मिट्टी कैसे है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे है, वहाँ का ये प्रोडक्ट कैसे आता है, कोकम कैसे आता है, ये सब हम लोगों ने उसमें डिटेल कवर किया है. तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू. माई पोजिशन पेपर ऑन GI, डिमांड ऑफ द इंडियन GI at WTO is also available at WTO's website. So those who wanted to go and deep about the study on the potential GI or impact of GI, for them these papers will be helpful, जो मेरी 2013-2015 की है. इसके अलावा नाउ कमिंग टू द एंड, क्योंकि अभी 4:50 बन गए मेरे को, मैं 5 मिनट में कवर करूंगा. मेरा 5 बजे का सेशन का है, 4:55 को मैं खत्म करूंगा. दिस इज आवर स्टेट वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन GI. यू कैन फाइंड. अब महाराष्ट्र सबसे ज्यादा हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, उत्तराखंड है, बोडोलैंड है, जम्मू कश्मीर है, वेस्ट बंगाल है, लद्दाख है. दिस इज प्रोडक्ट, मतलब जिस क्षेत्र में हम लोग सबसे ज्यादा हमारा 60% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर GI में रहा हुआ है. ट्राइबल का भी उसमें है, और महार और आर्टिसन मार्क. दिस इज हाउ वी हैव प्रोटेक्टेड आवर बॉर्डर्स, इंटेलेक्चुअल बॉर्डर. ये महाराष्ट्र के 50 GI का हम लोगों ने काम करने का मुझे सौभाग्य मिला हुआ है. ऑल आर अवेलेबल मेरी आर्टिकल के से. Now, last but most important message to you all about this success story के महाराष्ट्र में मार्कफेड नाम की संस्था काम करती है, जिसको मार्केटिंग फेडरेशन काम बोलते हैं. ये मार्कफेड नाफेड के लिए प्रोक्योरमेंट करती है, और मार्कफेड ने पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छा सक्सेस बना के रखा है कि हमारी जो GI है उसमें से 11 GI वो प्रीमियम प्राइस देके प्रोक्योर करते हैं और मुंबई जैसे शहरों में वो बेचते हैं. मुंबई में दे हैव प्लान 70 उन्होंने आउटलेट का प्लान बनाया रखा हुआ है, और इसका बेनिफिट अभी फार्मर्स को डायरेक्ट मिल रहा है. सो नाउ गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड प्रोक्यूरिंग द GI प्रोडक्ट विथ प्रीमियम प्राइस फ्रॉम द फार्मर and started selling those GI product in well-known market like Mumbai. So that is a very good success story at our end. With this, I just wanted to conclude or summarize the session. We discussed about the GI. What is GI? We discussed GI is intellectual property right. GI can be granted to the agriculture product or non-agriculture product. Agriculture product further includes your agri produce, like what we say, maybe वाइन और हमारे जो खाद्य पदार्थ है वो,
इसके बाद सेरिकल्चर के बारे में भी हम लोग देखा। म्यूजिक में जैसे बाम्बू, पर्टिकुलर टाइप का बाम्बू इस्तेमाल करते हैं, उस बाम्बू के लिए भी काम कैसे हुआ उसके लिए भी कर देखे। इसके अलावा हम लोगों ने सक्सेस स्टोरीज देखी, जो जलगांव बनाना हो, घोलवड़ चिक्कू हो, या फिर वायगांव टर्मरिक हो, आजरा घनसाड़ हो, जिसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा। इसके अलावा एंड में मैंने बताया कि हम लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखे हैं, पोजीशन पेपर है, बुक है और यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सेसिबल हो गए। अगर आप वापिस, मेरा नाम गणेश, GANESH, HINGMIRE क्लिक करोगे तो आपको उसको भी मिलेगा। एंड अल्टीमेटली एंड ऑफ द थिंग्स कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी ये GI प्रोडक्ट प्रोक्योर हो रहे हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबको देना चाहूंगा, एग्रीकल्चर की रिलेटेड बातें हैं। 2 साल पहले एक डाटा आया था, 74% फार्मर्स एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहते थे, और ऐसे में उनका रीजन था उनको प्राइस, फॉरगेट अबाउट प्रीमियम प्राइस, प्राइस ही नहीं मिल रहा है। तो GI मिलने के बाद आपको प्राइस क्या, प्रीमियम प्राइस मिलेगा। आपकी जर्नी होती है वो दार्जिलिंग के लेके, आप समझ सकते हो उन्होंने चांस से चॉइस की तरफ अपनी जर्नी की है। आई रिपीट, चांस से चॉइस। मतलब हम लोग कहते हैं कि मुझे, अरे भाई मेरे ये प्रोडक्ट को, ये मेरा गुड़ है, इसको जरा 10 रुपया कोई तो दे दे। वहां पे दार्जिलिंग वाले कहते हैं कि मुझे अगर 2000 रुपये कोई देता है तो ही मैं उसको दे दूंगा। तो दे डिसाइड द प्राइस, दे डिसाइड द कस्टमर किसको देना है। तो वो रिवॉल्यूशन लाने के लिए हमें GI रिवॉल्यूशन के साथ चलना पड़ेगा। वी बिगेन एंड this revolution, and then we gave the name to our organization called Great Mission. So with this note, I conclude my session, and I must express my gratitude towards the organizer for an opportunity to discuss this most important subject for agri-field, particularly जो नए वाले बच्चे इसमें आना चाहेंगे, जो साइंटिफिकली उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे, जो भारत माँ के लिए काम करना चाहेंगे, जो अपनी फार्मर्स के लिए जीवन जर्नी बनाना चाहेंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ा अमृत बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर एन